Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the pre-market report for 2nd September 2025, that is Tuesday. Friends, before we continue, let me make a disclaimer. मार्केट में कोई भी डाटा 100% गारंटी नहीं देते. एफएनओ डाटा भी कभी भी 100% गारंटी नहीं देते. लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो एफएनओ डाटा है वो 80% तक सही रहते. दैट मीन्स 80% ये डाटा सही गाइडेंस देते हैं. जो 20% है, 20% इज अनसर्टन. So that 20% why it is uncertain? Because sometimes news flow can take over the FNO data. That means कई कई के बार क्या होता है, जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया. मान लो एफएनओ डाटा में रिटेलर का बेरिश पोजीशन है, लेकिन नेगेटिव डाटा छाया हुआ है जो मार्केट के ऊपर, तब क्या मार्केट नीचे जाएगा. और एक और सिनेरियो भी हम चेक करते हैं. मान लो रिटेलर्स का डाटा बुलिश है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया. मान लो कल कल का ही एग्जाम्पल ले लो. हमारा जो जीडीपी डाटा है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया. तब क्या होता है, जो एफएनओ डाटा को इतना वैल्यू नहीं, जब इतना मायने नहीं रख पाते, तो न्यूज़ फ्लोस विल टेक ओवर अबो एफएनओ. तो आप लोग समझ गए होगा. अगर अगर कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं है, जैसे चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, तब एफएनओ डाटा का बहुत ही वैल्यू रहते हैं. तो ये महत्वपूर्ण डाटा रहते तब. तो आज का दिन कोई वैसे कोई बड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, तो हमारा एफएनओ डाटा का बहुत बड़ा वैल्यू है. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं. तो हाउ टू रीड दिस डाटा. फ्राइडे मीन्स ए डे बिफोर the trading day, and Monday is the last trading day. So total means whatever the positions carried by all the market participants for tomorrow. So this is the data. I hope this is clear. So today retailers they sold a little, that is 870 contracts, and the total index futures reduced to 1.29 lakh. There is no much difference. Day also they sold around 2,500 contracts, and their total index futures reduced to 34,000. FAI they purchased around 2,600 contracts. Their total sell has been reduced to 1.72 lakh. Pros, it's a negligible number, so they are holding 8,700 contracts in the long side. So overall, I would say that this data is still bearish because FA is heavily short on our index futures. Let us take a look at the index call. Index call में क्या हुआ? Retailers they sold more than 1 lakh contracts today, and their total index call longs reduced to 30,000. This is a good news for the market. And FA and pros both are net buyers. FA they bought around 23,000 contracts. Their net sell reduced to 51,000. Pro they bought today 85,000 contracts, and they become net longs. Till yesterday they were net short, and today they are net long. So overall, I would say the index call data, retailers are bearish and the biggies are bullish. This is positive for our market. And index put. So index put also, retailers reduce their index put rating by 85,000, but still they are holding 4.12 lakh contracts in the put rating side. DII कोई कारोबार नहीं है, और FA they sold around 78,000 contracts, and the total index put longs reduced to 1.96 lakhs.
Pros they sold negligible around 7,000 lots and their total longs it is reached to 1.8 lakh. So overall, I would say for today, retailers have taken bearish stance, and both FA and pros they took the bullish stance. Take a look at the index put side. So index put में क्या हुआ? The retailer 85,000 contracts बाय किया तो उनका जो टोटल इंडेक्स पुट राइटिंग है वो घटकर 4.12 लाख रह गया. डीआई का कोई कारोबार नहीं है. एफए एंड प्रोस दे आर बोथ नेट sellers today, and FA their total put longs reduced to 1.96 lakhs, and for pros their net longs reduced to 1.8 lakhs. So overall, I would say for today's data, this is uh, bullish because retailers have taken bearish positions and biggies have taken bullish stance. But overall, retailers are still holding 4.12 lakh of index put writing, whereas both FA and pros they are holding put longs. Actually, this is a bit confusing because if there is always a fear that because of this index put longs, the biggies can bring down the market at any point. Yeah, we'll also take a look at stock futures. स्टॉक फ्यूचर में फ्यूचर से अच्छा खबर आते हुए देख रहे हैं. तो आज एफए ने और 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया और उनका टोटल स्टॉक फ्यूचर में 14.17 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया. 14.17 लाख. सो रिटेलर्स ने कुछ सेल किया, कुछ 6,700 लोड्स, और एफ ए ऑल्सो दे सोल्ड अराउंड 33,000. Pros also they sold around 7,000 contract, but overall I would say the stock future data is bullish because most of the participants they are carrying index futures long. And index call side, so here also retailers sold around 21,000, DA also sold around 33,000, and FA sold around 5,500. But then pros they bought the entire contract, so they bought 60,000. So overall, I would say this data is mixed because big players are on the short side. Index put here also the volumes are less, and retail is उसने खरीद लिया कुछ 26,000 लॉट्स और उनका जो पुट शॉर्ट है वो घट के 2.18 लाख रह गया. एफए का नेग्लिजिबल नंबर है और प्रोस ने कुछ 26,000 राइट कर दिया. उनका जो पुट लॉन्ग्स है जो स्टॉक साइड में वो घट के 1.89 lakhs रह गया. So overall I would say this data is also mixed. But if you look at the overall data, so index future is bearish, but index call is bullish, index put is bullish, and stock futures are bullish. So overall, I would consider this data, the FNO data, it is bullish for tomorrow. So that means the bullish momentum will continue. Cash market, FA sold. I would say FA reduced their selling. Usually they used to sell more than 5,000, 6,000 crores, but today they sold only 1,400 crores, and whereas DIA they bought more than 4 to 300 crores. Okay, so yeah, this is also looking good. Let us take a look at the market overview happened for 1st September Monday. So we can see that Nifty closed above 0.81 percentage, almost 200 points. Sensex also closed more than 550 points, almost zero point 0.7. Nifty Bank 0.65. I would say Nifty Bank it is underperformed, and probably tomorrow we could see a massive rally in Bank Nifty. Just watch out Bank Nifty. Indevix it crashed almost 4 percentage. ये खतरनाक होते हैं जो इंडेविक्स जब गिर जाते हैं सी प्रीमियम्स बढ़ते नहीं, चाहे मार्केट ऊपर जाते हैं लेकिन सी प्रीमियम अब प्रोपोर्शनली बढ़ते नहीं है. ये भी कुछ खेल हो जाते हैं. हमेशा ये भी देखते रहना जैसे अगर विक्स ज़्यादा गिर गया उसमें जैसे इमीडिएट प्रॉफिट बुक करना मांगता है, ज़्यादा देर अगर बैठ गया तो डी के जल्दी हो जाते हैं. वैसे भी कल एक्सपायर इन निफ्टी का ज़्यादा देर किसी भी ट्रेड में बैठना नहीं.
और मिड कैप सेलेक्ट आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दिया इसने, 265 पॉइंट और 2.13%। यूएसडी आईएनआर तो मैं ये रेड में लिखा है, लेकिन ये अच्छा है मार्केट के लिए। जैसे INR, it shown some strength against USD. You can see it is only 0.14, but it is still showing some strength. So this is good for market. क्रूड थोड़ा ऊपर दिख रहे, नेचुरल गैस हल्का सा नीचे। और मैं इसमें आप लोग पोस्ट करके देख सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहते। निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लॉसेस देख लेना। जो वाई आई एम पुटिंग दिस निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लॉसेस। अगर मान लो निफ्टी टॉप गेनर्स से बजाज ऑटो आज 4% के ऊपर बंद हुआ, कल गलती से भी इसको शॉर्ट नहीं करना इसे मार्केट खुलने के टाइम, क्योंकि इसमें ये कंटिन्यूस मूवमेंट का कुछ बाकी रहते हैं। हमेशा भी जो कोई भी स्टॉक है वो अच्छा बुलिश मोमेंटम में रहता है, खुलते ही उसको शॉर्ट कभी नहीं करना। वैसे जो स्टॉक्स है वो जो नीचे गिरा हुआ है उसको कभी भी पहले कैंडल में इसको लॉन्ग के लिए कंसिडर नहीं करना। थोड़ा देर वेट करना, अगर जो शुरू का जो मोमेंट सेटल होने के बाद ही इनमें शॉर्ट या लॉन्ग खोजना। और जो सेक्टरल परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पोस्ट करके, तो मैंने जस्ट डाला आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। जहाँ भी जैसे ऑटो ऑटो आज बहुत भागा, कल ऑटो में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल सकती इसका कारण। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा भागा। हो सकता है जो शुरू का 5-10 मिनट में इसमें कुछ अप मूव आ सकते हैं, उसके बाद ये साइडवेज हो सकते हैं। जैसे फार्मा वगैरह है, फार्मा डाउन दिख रहे हैं, लेकिन कल फार्मा ऊपर आने के चांसेस है। और जो फिनेंशियल सर्विस और बैंक भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया, तो ये भी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर भी कल भाग सकते हैं, इसमें नज़र रखना। और जो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ से मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते, आप लोग इसको पोस्ट करके अच्छे से रीड कर लेना। और या ये आ गया टेक्निकल ओवरव्यू फॉर टुमारो। तो निफ्टी का सपोर्ट है 24,500 में। अगर जब तक निफ्टी 24,500 होल्ड कर रहा है, बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर ये टूट गया, उसका अगले सपोर्ट है 24,300 फॉलोड बाय 24,250। अगर 24,250 टूट गया तब ये 24,000 तक जाएगा। अभी तो इसका संभावना कम ही दिख रही। रेजिस्टेंस है 24,650। अगर 24,650 क्रॉस हुआ तो 24,700 तक जा सकते हैं। So, and you can also note that 50-day EMA is near 24,850. So 24,850 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, उधर जाने के बाद एक रेसिस्टेंस ले सकते हैं कल। और जो डिसिसिव ब्रेक है वो, अगर बाई चांस कुछ शॉर्ट कवरिंग बाद अगर ये 24,850 के ऊपर निकल गया तो ये सीधे 25,000 तक जा सकते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि कल ही हो जाएगा, हो सकता है इस हफ्ते में ये 25,000 और 25,250 टू 25,500 तक जा सकते हैं अगले 1-2 हफ्ते में। उसका पीसीआर 1.13 है, सो दिस इज गुड पीसीआर। सो इट इज नॉट शोइंग इट इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी or under overbought territory as well. Bank Nifty, the key support is 53,600 to 53,800. Till the time Bank Nifty is holding 53,800, bulls are good. सो रेसिस्टेंस इज 54,350। अगर बैंक निफ्टी एक बार 54,350 के ऊपर निकल गया तो बहुत बढ़िया रैली हमको हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये आई थिंक आई हैव रिटन इट इज इनकरेक्ट, इट इज 54,750। ओके, सो इंस्टेड ऑफ या प्लीज रीड इट 54,750। सेंसेक्स में 80,000 और 80,200 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और जो ब्रेकआउट है, जो रेसिस्टेंस फर्स्ट रेसिस्टेंस है 8500 टू 8600 आएगा। अगर 80,600 ऊपर अगर सेंसेक्स निकलने में कामयाब होगा तो एक बड़ा रैली देख सकते हैं 81,000 तक। और कल के लिए मेरा व्यू यही रहेगा कि ब्रॉडर ट्रेंड रिमेन्स द स्लाइट पॉजिटिव बायस, और इंडेक्स ऑलरेडी रिक्लेम द सपोर्ट एंड इट इज इन द कंटिन्यूस मूव। एंड कल कल भी हमारे लिए जो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रहेगा, लेकिन जो वैल्यूएशन और एफआईआर नेट सेलर है ये से कुछ कंसर्न है, लेकिन आप लोग देखते रहना। सो ज़्यादा देर कोई भी ट्रेड के ऊपर बैठना नहीं है।
अगर आपका एक बार प्रॉफिट हो गया उसको बुक करके निकल जाना। तो कल के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बेहतर आया। तो कल भी इसी के ऊपर एक पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे, गिफ्ट निफ्टी माइल पॉजिटिव है, कुछ 25 to 30 पॉइंट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए कंटिन्यूस बुल रन टुमारो. So in the second, if at all you wanted to consider shorting, and if it is taking the if it is reversing from the resistance, then you can consider. Otherwise, in the morning, avoid shorting because today there is no global cues. US market is on holiday. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like this video. Thank you.